पेंशनर्स। तो अभी जो एफिडेविट फाइल करा है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसका जो एफिडेविट है वो अभी हम देखने वाले हैं। तो वो एक्चुअल में है क्या? सो इट इज़ फर्दर मोस्ट respectfully submitted that Indian Banks Association, that is respondent number 3 in the present petition as mentioned here in above, is an association of banks and is neither the state nor the instrumentality of state, and therefore petition under article 226 of the Constitution of India is not maintainable against the Indian Banks Association. So verification, I say that the content of above affidavit are true and correct as per my knowledge, and no part of it false and nothing material has been concealed therefore. So verified at Mumbai on 24th day of August. देख सकते हैं आप अगस्त में ये तैयार हो गया था। तो guys please subscribe to my channel for latest pension updates. And after that अगर हम देखें that it is further most respectfully submitted that Indian Banks Association, that is sponsor number 3 in the present petition as mentioned here in above, is an association of banks and is neither the state nor the, ये तो सेम ही हो गया, that in view of the foregoing it would neither be appropriate nor possible for banks to consider the request for representation या claim requesting for updation of पेंशन। सो देख सकते हैं इसमें उन्होंने लोग इन आईबीए ने क्लियरली शॉर्टकट वे में कह दिया भी हम लोग अपडेशन दे नहीं सकते। तो ये पॉइंट 3.8 3.7 दैट देयर इज नो प्रोविजन इन पेंशन रेगुलेशन in 1995 BEPR 1995 for any updation in the pension of bank employees and officers, that therefore it would neither be appropriate in principle nor would be financially viable for the banks to accept the representation claim of employees for updation of pension at par with central government employees, particularly when there is no parity between two set of employees, that is the central government employees and bank employees, for the reason that the pension in the bank is paid out तो of the pension funds carried out of the bank's contribution to the PF, whereas in respect of central government employees that pension is paid not out of pension fund but is treated as a revenue expenditure। तो पेंशन को पेंशन फंड से दिया जाता है, उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है एंड पेड आउट ऑफ द बजटरी एलोकेशन। तो पेंशनर्स देख सकते हैं आप कैसे आईबीए ने चीट करा है दिस टाइम। आईबीए ने जो एफिडेविट अभी सुप्रीम कोर्ट में दिया है उसमें क्लियर कट बोल दिया अभी कोई प्रोविजन ही नहीं है इन बीपीआर 1995 एक्ट फॉर अपडेशन ऑफ पेंशंस। तो गाइस अभी हमें अपनी जो फाइट है वो थोड़ी सी और स्ट्रेंजर करनी पड़ेगी। सो आईबीए क्लियरली गवर्नमेंट का साथ दे रही है एंड इज नॉट एट ऑल helping the bankers. So guys please share this news and subscribe to channel for pension updates. Thank you guys.